Jai Hind. Today we will deal with another topic, that is mutation. Now, what is mutation? A mutation is defined as an inherited change in genetic information. तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं उनमें चेंजेस हो जाना और वो चेंजेस भी स्पेसिफिकली इनहेरिटेड हो, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं, तब हम इसे म्यूटेशन कहते हैं. एंड दैट म्यूटेशन वी आल्सो टर्म्ड एज अ सडन चेंज, जो नेक्स्ट जनरेशन में फिनोटिपिकली भी अपेयर हो, और समटाइम्स इट मे कैरी ऑन फॉर सेवरल जनरेशन, देन आफ्टर दैट इट इज phenotypically expressed. A mutation is a change in a DNA sequence. Mutations can result from DNA copying mistake made during the cell division, exposure to ionizing radiation, exposure to chemicals, which we call as mutagens, or maybe due to infection by viruses. The term mutation was given by De Vries in 1901 while he was studying an important plant, that is evening primrose. The botanical name is Oenothera lamarckiana. Now, these mutations, which we are referring, changes in the nucleotide sequence of DNA. This is the most important part. Means the changes must take place in the nucleotide sequences. They may occur in somatic cells, which may not pass to the offsprings. Mutations somatic cells में भी हो सकती हैं during cell division or due to effect of other climatic factors or chemicals or some physical agents or radiations, but it is not necessary they may pass to the next generation. उसी generation तक रुक जाते हैं. They may occur in gametes. If they occur in gametes, as in eggs or sperms, female or male gametes, they generally pass to the offsprings and phenotypically appeared in the next generation. Now, as you were suggesting, the agents which cause the mutation, we call them as mutagens or generating mutations. So mutagens are substances that change the genetic information of an organism, usually by changing DNA. तो DNA में जरूर, यानी जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चेंज होना है और वो अगली जनरेशन में जाए. म्यूटेशंस आर जनरली आल्सो कार्सिनोजेंस. तो जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं एजेंट्स, वो डीएनए में चेंज करते हैं और जनरली कार्सिनोजेंस होती हैं. कार्सिनोजेंस का मतलब टॉक्सिन्स और कैंसर कॉजिंग. दे ऑफन कॉज कैंसर. Common mutagens include as chemical mutagens, ethidium bromide, formaldehyde, dioxin and nicotine. है ना, nicotine you know that जो खैनी यूज की जाती है ना, टोबैको से निकल रहा है, तो इसका मतलब that may cause mutation. Mutation is replacement of nitrogen base with another in one or both the strands, or addition or deletion of a base pair in a DNA molecule. So we have already studied about chromosomal changes, structural changes in chromosome as well as numerical changes in chromosomes that may lead to the mutation also. So that mutagens may cause these aberrations also. Now, what are types of mutagens? If we study about chemical mutagens, these may be alkylating agents, these may be base analogs. Base analogs होते हैं कि they analog the base pairs, और मतलब है different but same type के amino acids को
कोडिंग के समय अटैच कर सकते हैं जेनेटिक कोड में चेंजेस होने के बाद। मिथाइलेटिंग एजेंट्स, डीएनए इंटरकैरेटिंग एजेंट्स, तो डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। नेक्स्ट आर यूवी रेडिएशंस which generally act as a mutagen, then other ionizing radiations as mutagenic agents. Now, types of mutations, or if we classify the mutations based on causes of mutation, they may be first spontaneous mutation, स्वतः जनित, and second is induced, जिनको कि किसी न किसी कारण से होना, यानी इंडक्शन के कारण प्रेरक। फर्स्ट लेते हैं spontaneous mutations. They are mainly caused during DNA replication or by incorporation of incorrect nucleotide, है ना, you are observing here. तो जनरली डीएनए रेप्लिकेशन के समय ही चेंजेस होना है, यानी इंसर्ट होना है या डिलीट होना है, तो दैट incorporation of incorrect nucleotide in the growing DNA chain, जब रेप्लिकेशन होता है न्यू बेस पेयर्स ऐड होते हैं, और उस समय इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर ऐड हो गया, तब उसके कारण जो चेन बढ़ रही है या न्यू चेन अटैच हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री चेन अटैचमेंट हो रहा है, उसमें म्यूटेशन कॉज होना। दे अकर नेचुरली बाय चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और दिस इज जनरल फीचर म्यूटेशंस इन बैक्टीरिया। तो ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस माइक्रोब्स में ज्यादा होते हैं, जो नेचुरली होते रहते हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन। Second is induced mutation. Induced mutations are caused by the changes in DNA brought about by some environmental factors called mutagens. That may be UV radiations, X-rays, or gamma radiations, etc. So this is a general view that if radiation affect at a place, there may be, here UV radiation is coming from external environment. So that may cause the breakage of DNA or changes in the attachment of another base pairs at that breakage. So this may be the induced mutation. Now, types of mutations according to the place where mutations are taking place. First is chromosomal mutation, and second is gene mutation. Just a minute, continuing. Okay, the chromosomal mutations, they may be of different types or due to these processes occurring in the chromosomes. So we have already studied, but again we are revising. Under the head mutation or chromosomal mutation, they may cause chromosomal aberrations. First is deletion, second is duplication, third inversion, fourth translocation, and fifth non-disjunction in the chromosomes. Similarly, gene mutations may be of two types. First is point mutation, means at a point that may be silent, हो रहा है लेकिन appear नहीं हो रहा, phenotypically भी पता नहीं लग रहा। missense यानी जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कोई बेस पेयर चेंज हुआ एट ए पॉइंट, बट मिससेंस कर लिया गया, यानी उसकी जगह कोई दूसरा एमिनो एसिड अटैच हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के समय। नॉनसेंस टाइप, नॉनसेंस हो सकता है कि इतना चेंजेस हो जाए कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन हो रही है, दैट मे स्टॉप ड्यू टू दिस gene mutation at a point. Then frame shift mutation, complete frame has been changed by the similar process as we have studied under chromosomal mutation, inversion
इन्वर्ट हो जाना सेगमेंट का और डिलीट हो जाना, जिसकी वजह से फ्रेम ही चेंज हो गया। फ्रेम चेंज होने का मतलब बननी चाहिए एक तरह की प्रोटीन, कोई दूसरी टाइप की प्रोटीन बन गई। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस एट ए प्लेस वेयर दे आर अकरिंग। Now come to first type, chromosomal mutation. We have already discussed under the head numeric chromosomal aberrations, but again, under the head mutation, what we have to write in the question. Okay, it involves changing in the structure of chromosome. During this type of mutation, structural changes occur in the chromosomes. The loss or this is gain, the loss or gain of part of a chromosome. So in the chromosome, at any place, means at any chromatid arm, that may be deleted or that may be added, means changes may occur. Now, under this head, chromosomal mutation, first is deletion. We know that it is due to the breakage in the chromosome. At the time of division, a piece of chromosome is lost, or a piece of chromosome containing any specific base pair or the part of nucleotide is lost. As observed over here, this piece during the divisional stage, it is lost in this chromosome. So this is deletion. Now, at this place, if important genes are present or important genetic code is forming genes are there, so they may change in the change the type of protein or may change the genetic constitution of an organism. Second is duplication. It occurs when a gene sequence is repeated. We know that this type of this sequence, this is the normal chromosome. During cell division, divisional stages or meiotic division, prophase 1, this segment is repeated. This is duplicated over here. So it may cause changes phenotypically in the next generation. Third is translocation. It involves two chromosomes that are not homologous. Means translocation occurs between two non-homologous chromosomes. Part of one chromosome is transferred to another chromosome. Here, two chromosomes have been depicted, chromosome 4 and chromosome 20. What is happening? A part or a segment of DNA is transferred from 4 to 20. You can observe here, this segment has been shifted from 4 to 20. So this is mutated chromosome. Definitely, if it will affect the next generation, which is expressed phenotypically. Now come to fourth type, that is inversion. Chromosome segment breaks off, segment flips around backward, and segment reattaches. So this occurs during inversion. This segment is inverted at 180 degree. You can see here, this segment at the lower side and this is at the upper side. So inversion में completely 180 degree segment change हो गया, move कर गया. कैसे move किया? During cell divisional stages, breakage takes place, inversion takes place, and reattachment takes place due to the ligase activity. So this inversion also shows the mutation. Then fifth type is non-disjunction. Then failure of chromosome to separate during meiosis causes gamete to have too many or too few chromosomes. तो ये भी हम already पढ़ चुके हैं कि chromosomes में at the stage, suppose this is a normal chromosome, homology takes place, homologous chromosomes come together,
दे आर नॉन डिसजंक्टेड, मतलब ये सेपरेट होकर के गैमेट्स में अलग अलग नहीं गए। तो अलग अलग नहीं जाने से क्या हुआ कि वो एक साथ जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनने चाहिए थे वो डिप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगर उनका फिर हैप्लॉइड के साथ मेटिंग होगा या फर्टिलाइजेशन होगा तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह से ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड कंडीशन रेज होती चली जाती है। तो नॉन डिसजंक्शन यूजुअली अगर ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनमें सिंड्रोम कॉज करता है। प्लांट्स में ये गाइगेंशिया कॉज करता है, यानी जियांट बन सकते हैं, बड़े फ्रूट्स हो सकते हैं, बिग फ्लावर्स हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग प्लांट्स में मार्क नहीं करते, कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा साइज का फ्रूट निकला है। लेकिन अगर एनिमल्स में है या ह्यूमंस में है, स्पेशली अगर डबल एक्स हो जाए, ट्रिपल एक्स हो जाए या डबल वाई ट्रिपल वाई हो जाए, तो इस तरह की जो है वो एनोमलीज सुपर मेल सुपर फीमेल्स होती हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। तो दीज डिसऑर्डर्स जनरली अपीयर्ड एज डाउन syndrome and Turner syndrome due to non-disjunction. This is also mutation. Now coming to the second type of mutation, that is gene mutation. First is point gene mutation. At a point, we have already studied the classification shown you in the earlier slide. Changes of a single nucleotide. It includes the deletion, inversion, SIN, substitution of one nucleotide in a gene. एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो सकता है। जनरली दिस इज अपेयर्ड इन सिकल सेल डिजीज, है ना, इन ह्यूमन बींग्स, और that may be due to substitution occur in hemoglobin gene. और इसमें क्या हुआ, सिकल सेल शेप, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है सिकल सेल शेप की आरबीसीज फॉर्म होती हैं। और ऐसे में ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, और जब सिकल शेप हो जाती हैं तो इनमें बाइंडिंग कैपेबिलिटी फॉर हीमोग्लोबिन लैक्स, तो वो हीमोग्लोबिन जीन पे जो है वो अफेक्ट होता है। तो ऐसे केसेस में क्या है, एनीमिया कॉज हो जाता है ना, ब्लड की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन हुआ है। और धीरे धीरे वो एनीमिक कंडीशन और सिकल सेल जिनमें एनीमिया हो जाता है वो यूजुअली उनकी एज, उनकी लाइफ कम होती है। तो दिस इज पॉइंट जीन म्यूटेशन। पॉइंट जीन म्यूटेशन भी फर्स्ट साइलेंट म्यूटेशन हो सकता है। देयर इज नो डिटेक्टेबल इफेक्ट। कभी कभी म्यूटेशन हुआ और डिटेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोडॉन, कोडॉन में चेंज हुआ, सिनोनिम, और नो चेंज इन द अमीनो एसिड। अब क्या हुआ कि वो जो कोडॉन चेंज हुआ वो सेम अमीनो एसिड को फॉर्म करेगा। तो प्रोटीन के सीक्वेंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ, अमीनो एसिड प्रॉपर्ली अटैच हुए। हाँ, चेंज कहाँ हुआ था, एक बेस पेयर का चेंज हुआ था। तो कोडॉन में थोड़ा सा डिफरेंस होने पर ये साइलेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल TTC इज अ नॉर्मल कोडॉन विच अटैचेस द लाइसिन, है ना। तो mRNA लेवल पे ये एंटीकोडॉन AAG और लाइसिन को अटैच करेगा प्रोटीन के लिए। इसमें जो चेंज हुआ वो TTT हो गया, इंस्टेड ऑफ C T occurs here। तो इसकी वजह से जो हमारा mRNA पर AAG था, यहाँ पर ये AAA हो गया। लेकिन ये AAA भी लाइसिन को ही इनकॉर्पोरेट करता है प्रोटीन में। तो ये हुआ तो, लेकिन क्या हुआ कि लाइसिन ही बनी और वो सेम जगह पे अटैच हुई प्रोटीन में। तो देयर इज नो चेंज और नो विजिबल म्यूटेशन, बट इट इज साइलेंट, but it occurs. And second is missense mutation. A different amino acid is incorporated at a corresponding site, है ना। अब क्या हुआ, जो चेंज बेस पेयर में हुआ उसकी जगह पर एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड अटैच हो गया, तो मिससेंस हो गया। तो मिस्टेकन अमीनो एसिड अटैच टू द प्रोटीन चेन। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द मिस्टेकन अमीनो एसिड इन द स्पेसिफिक प्रोटीन, मिससेंस म्यूटेशन अकर। अब क्या होगा, शेप ऑफ प्रोटीन फिनोटिपिकली चेंज हो जाएगा। जहां जरूरत है इस प्रोटीन की वो वहां नहीं पहुंचेगी, है ना, क्योंकि जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाना है या किसी ऑर्गन में जाना है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, हेयर में आना है, तो वो अब अलग हो गया। अब वो जहां जरूरी है वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या हुआ, व्हाट चेंज अकर, इंस्टेड ऑफ दिस, देखिए GAA है, अब इसमें चेंज किया हुआ, C प्लेस पे चेंज हुआ, यहां पर चेंज हुआ, इंस्टेड ऑफ ए C इज अटैच्ड ओवर हियर ड्यूरिंग
सेल डिविजनल स्टेजेस। अब GAA किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को। तो ये प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड अटैच करता है और ये शेप की प्रोटीन बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ A C आ जाता है बेस पेयर, तब C मीन साइटोसिन, तब ये क्या करेगा? ये एस्पार्टिक एसिड को अटैच करेगा और प्रोटीन स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज। ये शो भी क्या है रेड से कि यहाँ पर चेंज हुआ, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, बिकॉज द सीक्वेंस हैज बीन चेंज। तो ये एक तरह से मिससेंस होता है और रिक्वायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, मीन्स जहां ये इनकॉर्पोरेट होनी है वहां नहीं पहुंच पाती। तो दिस मे अपीयर phenotypically. Then third is nonsense mutation. Nonsense mutation leads to the conversion of an amino acid codon to stop or nonsense कोडॉन। तो ये जहां भी चेंज होगा नॉनसेंस होगा, वो हो सकता है चेन को स्टॉप कर दे, है ना। तो नॉनसेंस का मतलब वो एक तो प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा या प्रोटीन चेन ही स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए उसको वही अमीनो एसिड चाहिए जो कि चेन को कंप्लीट करे। तो इंस्टेड ऑफ G हियर, ग्वानिन की जगह पर क्या हो गया? थाइमिन आ गया। अब ये थाइमिन जो ग्लूटामिक एसिड से मेथिओनिन के बाद ग्लूटामिक एसिड से चेन को कंटिन्यू करता है, वो चेन यहाँ पर स्टॉप हो गई। तो ये नॉनसेंस हो गया, यानी अब वो बनेगी ही नहीं प्रोटीन अगर इस तरह का म्यूटेशन हो गया। Now, second is frame shift mutation, inserting or deleting one or more nucleotides due to deletion or insertion. This may take place, already we have studied. Change the reading frame. अब क्या होता है? जो रीडिंग फ्रेम है वो एकदम चेंज होता है, लाइक चेंजिंग अ सेंटेंस। जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा जाए और उसमें कोई चीज पूरा इन्वर्ट कर दिया जाए या इंसर्ट कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए, तो उसी तरह से जैसे एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से प्रोटीन के फॉर्मेशन में इनकरेक्टनेस आ जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रोटीन बिल्ट इनकरेक्टली, प्रोटीन तो बनेगी, आगे चेन बढ़ेगी, लेकिन अगर चेन में 20 अमीनो एसिड्स अटैच होकर के वो एक पर्टिकुलर शेप की, पर्टिकुलर साइज की प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, तो वो हो सकता है प्रोटीन छोटी बने, प्रोटीन की पूरी चेन कंप्लीट ना हो पाए। तो जिस तरह से यहाँ पर शो किया गया है ना, ये है यहाँ पर, तो ये ग्लूटामिक एसिड को अटैच करता है GA, और अगर ये इंस्टेड ऑफ दैट ये फुल चेंज, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, या तो इन्वर्ट हो गया पूरा, या यहाँ पर देखिए एक बेस कम हो गया, और यहाँ पर ये चेंजेस होने की वजह से अब ये दूसरे अमीनो एसिड कुछ दूर तक तो अटैच करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट लाइसिन अटैच कर दिया, हिस्टामिन अटैच कर दिया, लेकिन ये चेन कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फॉर्म हो गई वो चेन, बिकॉज एट सेवरल प्लेसेस फ्रेम हैज बीन चेंज्ड। वहां तो केवल एक पॉइंट पे हुआ था, यहाँ पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ। Now, what is the significance of mutation? First is the ultimate source of all genetic variation is mutation, है ना। तो ये तो जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स है ही है, वेरिएशन होता चला जाता है one to another or another generation. Mutation is important as the first step of evolution, क्योंकि evolution का बेसिक है, आधार है, because it creates a new DNA sequence for a particular gene, creating a new allele, subsequently creating a new species and a new genus. Recombination also can create a new DNA sequence, a new allele for a specific gene through intragenic recombination. Recombination भी ये करता है cause, लेकिन recombination छोटे स्तर पे है, केवल वो करेक्टर का वेरिएशन शो करता है, लेकिन म्यूटेशन इसको अगली पीढ़ी में ले जाने के बाद कंप्लीट चेंज भी कर सकता है और एक न्यू स्पीशीज जनरेशन में सपोर्ट करता है। सो इट इज द बेस फॉर इवोल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो बेस में एक आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अलग से भी तैयार कर लेंगे 5 मार्क्स का, म्यूटाजेंस पे, है ना, केवल म्यूटाजेंस पे आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, सो यू विल प्रिपेयर दैट ऑल्सो। ओके, आई होप बहुत डिफिकल्ट नहीं है, you will complete this topic. Now I will see what has been left under genetics, so I'll deal with the next topic. Jai Hind.